So, very good morning to our honorable resource person, Mr. Arjun Panchal, sir, esteemed faculty members, and all your students present here in the meeting today. On behalf of Sanatan Dharma College, Ambala Cantt, I would like to extend a very warm welcome to the entire gathering here. Today, we have come together on this virtual platform for the invited talk on entrepreneurship and youth, which is being organized by Entrepreneurship Development Cell and Institutions Innovation Council, Sanatan Dharma College, Ambala Cantt, in association with IIC, Ministry of Education, Government of India. Sanatan Dharma College has always been engaged in providing multiple platforms to the students for their overall development. No stone is left unturned in the efforts to make the students competent enough to face a professionally challenging world and in grooming them for a better career. IIC and EDC of the college has been established to inculcate entrepreneurial culture amongst its youth and equip them with skills to act as job creators instead of being job seekers in future. The key aim of the cells has been to foster entrepreneurship amongst the students of the college for generation of employment opportunities and creation of wealth. With high hopes and best skills as we were moving forward, we all had to face a situation of pandemic in late 2019. The entire ST College family has been working to the best of their capacities for helping the society in dealing with the pandemic. And during those times when there was heavy loss of life and livelihoods, somewhere it has been realized that one needs to be self sufficient and should not depend upon someone else for his or her bread and butter. Carrying the legacy forward, may I please take this opportunity to invite Dr. Prem Singh, sir, convener of Institutions Innovation Council of the college, to kindly present the welcome address and introduce our worthy resource person. Over to you, Prem, sir. Sir, you're not audible. Uh, so maybe you can connect through mobile once, or you can rejoin the meeting. So Prem sir would be joining very shortly with us. So once again, we would like to welcome all the participants. Hello. Yes, sir, you're audible now. Okay, ma'am. Thank you. Hello and good morning, everyone. It is my great pleasure to welcome you all in today's webinar entitled Entrepreneurship and Youth. I would like to extend an especially warm welcome to today's distinguished speaker, Mr. Arjun Panchal. Sir, I, on behalf of our management, Honorable Principal Dr. Rajendra Singh, worthy faculty members and students, welcome you in Sanatan Dharma College, Ambala Cantt through this online platform, Cisco WebEx. Sir, Sanatan Dharma College, Ambala Cantt is a college with potential for excellence, UGC New Delhi, and has been awarded A+ grade in the third cycle of accreditation by NAC Bengaluru with CGPA of 3.51 out of 4. The college was established in 1916 by Bharat Ratan Pandit Madan Mohan Malviya ji, the founder of Banaras Hindu University Varanasi, and the foundation stone of the relocated college at Ambala was led by the first president of India, Dr. Rajendra Prasad. Sir, it is my great honor to formally introduce you with the audience. Mr. Arjun Panchal is an entrepreneur, professor, author, and a motivational speaker. He is a startup mentor at SIBM Pune, IIT Bombay, and Innovation Cell, Ministry of Human Resource Development, Government of India. He is also being called as guest speaker, judge at various seminars
B Plan competitions at other management institutes. He has mentored 500 plus entrepreneurs and assessed 2,500 plus B plans in the span of the last 5 years. He was also awarded for his contribution to entrepreneurship ecosystem by Sri Balaji Society. Arjun sir, hailing from Nagda, Madhya Pradesh, after high school, did his engineering from Indore and pursued MBA from University of Massachusetts, Boston. Post MBA, he worked with an esteemed organization, ESRI, in Los Angeles. However, after staying for half a decade in the US, his cherished dream was always to be an entrepreneur, for which he turned down a permanent offer in the same company and returned back to India to make way of his own in 2015. In Pune, he started a chain of Mexican food outlets by the name Papa Japata, which has expanded to 6 outlets in the span of 3 years. Arjun sir has recently written a book, What Happens in America, portraying a story about a middle-class boy who aspires to chase his dreams from a small town to US and his diverse experiences with respect to the change in culture, relationship, struggle and fun. It is for all the students who aspire to go to the US for higher studies. Sir, I welcome you again in this esteemed institution, Sanatan Dharma College, Ambala Cantt, and it is our pleasure to listen to your expertise in entrepreneurship and in different fields of societal needs. Thank you very much, sir. Chavi ma'am. Thank you so much, Prem sir, for giving such a beautiful introduction for our worthy resource person today. We do realize that young minds are actually like sponges who are very ready to soak in whatever input they have with regards to the different aspects of the world and for the society. So, dear participants, with a heart full of hopes and with a mind full of ideas, today we are really privileged to have amongst us our honorable resource person, Mr. Arjun Panchal, sir. Now, may we please request, sir, to kindly begin with the session. Thank you so much, ma'am. Introduction. Thank you, Chavi ma'am. Thank you, Dr. Aarti ma'am, for inviting me. It's a pleasure and honor for me to be at SD College. Congratulations, sir, for being at A grade, at the college, getting A grade. And I am glad to know that it's the legacy of the college since 1960s, one of the oldest colleges, I believe, in India. So it's my privilege to be a part of it. Thank you so much, everyone, all the participants for joining. I know you had fun Friday night and partying last night and getting up early and being at the session. Thank you so much for your precious time. Let me tell you that when I was in college, the first time I heard about entrepreneurship in 2008 in my bachelor's was in third and fourth year, right? At that time, I heard for the first time. And you guys are lucky that, you know, there are programs, there are IIC, there are innovation cells, entrepreneurship cells at your college to help and support you. That support we didn't get at our time. I can say that at our time, you know, I'm that old enough now to say that our time. So guys, just enjoy the session for next 1 hour. We'll be discussing about the entrepreneurship. What is entrepreneurship? Is it for you? Most important is that entrepreneurship is there, startups are there, but is it for us? So that's what we will learn in next 1 hour. If you have any doubts, please keep participating, and I would like your energy and see your energy. In one word, you want to just say hi so that I know that you are there, not just logged in, you are just there, and then we'll start. I mean, for me, yo is the, wherever I go, yo is something which gives me energy. What gives you energy? That one word, that gives you energy. What is that? Like yo is for me. Like since Boston, like we are like yo. What is that one word? I want to see in the chat box so that we can start. Let me share my screen. And here is the, ma'am, can you hear me? And can you see can you hear me, by the way? Yes, sir, you're absolutely clearly audible.
And you can see my screen as well. It's loading, sir. Yeah, it's visible. Okay. Okay, everyone. So this is the session for you. Just be in the session. There are so much content in next 1 hour. Be attentive. Enjoy. It's kind of a ride. It's kind of a ride for you, entrepreneurship and you. Before I start anything, I want to know from you that what do you see on the screen? These are 5 pairs of jeans, old jeans, which are kept in your closet for years. And you think that, yeah, will wear sometime, but you don't throw as well. How many of you have this kind of jeans, old jeans? My question to you is that, can you make money out of this picture? And if yes, how? Can you make money out of this picture? That's the thing. Yes, Ritik, trying is one thing I believe in, and I'll show you. Can we make money from this picture? Yes, Ritik, by creating YouTube video. Others, yeah, you can make YouTube video and make money out of it. Others, anything comes to your mind to make some creative art out of it? Yes, Ritik. Ritik is the spokesperson of the class, I believe, by turning these into trendy ones. Yes, Arpita, what is trendy ones? Anshul, redesigning it, yes. What can you sell, the new thing, redesigning, what can you sell? Like, you cannot sell old jeans, obviously. I mean, nobody's going to buy the old jeans. Yes, let's think about it by turning them into bags. Yes, Jasmine, thank you. Converting into planters, Ritik, thank you. Others, like, think about it. India में hardly ऐसा होता है कि people ask you to come up with the ideas, right? इतना सारा, you have so much content to grab in one semester. This is that opportunity. Someone is asking you to come up with the ideas. Yes. Okay. So let me give you these answers. These are today's fashion damage jeans. Yes. Ripped jeans, you mean to say. Anshul, yes, like, I mean, the same skirts and all. Arpita, thank you. Yeah, that's all what you can make money out of these jeans. Yeah, it's a beautiful bag. These are mobile covers, right? These are the shorts you can make. And this is not just an idea. I have seen students doing this kind of product, coming out of this kind of product, and actually selling it. Yeah. My next question is that if I ask you to start this business of creating a bag, what is the first step would you do? You can unmute as well if you want to unmute or write in the like. First, what is the first thing you would do? Let's start the business here itself. It's not a theory class. Let's start the business. You want to sell a bag. What's the first step would you do? What is that first step would you do if you want to start this business? Market research, maybe yes. Advertisements, Vanshita, directly advertisements. More, the first step. Look for the raw material. Yes. Someone on behalf of SD College, look for the raw material. Thank you. Yes. She's Chavi, sir. She's Chavi there. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for answering. This is right, that you look for the raw material. So what would you do? Like, it's simple, right? You would go to 10 friends and you will look for, hey, do you have the one old jeans? And everyone would have one jeans, friends or relatives. But first you will go there. You will collect 15 to 20 jeans. Yes, the second step
let's go for the second step. You have got the 20 jeans now. And if you want to pay them 50 rupees, okay. Or if you want to take them on chai and samosa, just like chalna yaar, chai pe chalte hain. Yaar ek jeans dena yaar, chai pilaiye yaar. So you can do that, right? These are, you have got, second is, what is the second step? You have got 20 jeans. Yes, collecting ideas according, yes. So what you want to make out of that jeans, let's say bag, then what would you do? What would you do with that jeans? Where would you go? Quick, it's not rocket science we are discussing. It's very simple. You have collected the jeans. Where would you go now? Second step. Yes, ideas. We have got the ideas. Bag. We have frozen the idea that is bag. Experiment and make best out of it. Okay. 20 jeans. Would we experiment best out of it? Yes, you have experimented. Then what would you do? It's simple. You have 20 jeans. What would you do now? Quick. Yes, what would you do? That's how your journey would be in any startup. That's why we'll go to the tailor. Exactly. Thank you, Neha. Thank you. You'll go to the tailors, get them stitched into a nice bag. Thank you so much. Then Neha. By the way, Neha and everyone, would you go to a roadside tailor or you would go to a boutique? Would you go to a roadside tailor or would you go to a boutique? Roadside, yes. Yes, costless, sure. And after that, he will stitch the bag in, let's say, 100 rupees, 50 rupees for the raw material for one jeans, and 100 rupees for stitching the bag. And you will stitch the tag also. And that's your brand name, right? You're creating a brand out of it. You're not doing a local business. It's a brand, right? And then you will go to wholesalers. Maybe you'll start your website and sell online on Instagram or Facebook, right? That's my question to you is, this journey, is it a rocket science? Is it a rocket science? Not really. But this is entrepreneurship. And we can do that. This is entrepreneurship. Observing the environment, finding the opportunity, coming up with an idea, gathering resources like tailors, and selling it and making profit out of it. Can you see the jeans which is kept in your closet can make money out of it? Yes or no? Do you like the idea, guys? Yes or no? In the chat box, you're there? Yes. And you can do that. What it takes that, inner zeal to do that. Yes, we can do that. Somebody is like, job karna hai, job mil jayega, college wale de denge to theek hai, nahi to chali rahi hai life to. No, I mean, I want to do that. I can do that. That's the thing. If you have that zeal inside you, this is entrepreneurship. Yes. Next, water bottle. Can you make money out of water? You keep throwing plastic water bottles. That's very bad now these days anymore. It's not appreciated to use plastic, by the way, but this is part of the society, and you throw it. Can you make money out of this water bottle? Yes. What can you make out of it? What can you make out of it? Grow plants, Vanshita, thank you. Yes. Decorative piece, Anshul, thank you. Make pots, Kriti, yes. You can make pots, and these are the stuff you can do with the water bottle. Yes, you can make pots, decorative items, and the people are making, one of the students, his dad has a construction company, they're making roads out of it. Imagine the 100-kilometer road if you make using plastic. Obviously, it's not pure plastic, it's the mix of plastic with concrete. Imagine how much help you are doing to the society. Yes, the roads we are building. These are the actual pictures. One of the students, Shruti Jain from SIBM, she's doing this business in Indore. Yes, you can decorate. And you must have seen in your cities as well that some bridges or some roads are being decorated by the government projects. Yes. What it takes, what is the first step would you do? You go and buy plastic bottles, Coke bottles,
from Kabadiwala. Again, 20, 30. How much? Nothing, like hardly is the cost, not 50 rupees. Then where would you go? You would go to nurseries to get the saplings or plants, design it. Then you would go to the societies to sell it. And you will create your social media and etc. etc. That's part of it. My question is it rocket science? No. And this is entrepreneurship part. And we can do that. What it takes to start this business, that coming up with observing the need in the society, observing the idea, observing the opportunity, coming up with an idea and gathering resources like nurseries, plants, and implementing it. This is entrepreneurship. Yes. Let's talk about some technology as well, some tech products, which is around them. Yeah, that was creative products. This is need of social media. My question is, Facebook. Hey, you must be asking, like, what's this, like Facebook? You don't know Facebook, man. This is some old stuff you're talking about 10 years. We are not there on Facebook. Anyway, my question is, what was the need of Facebook? In the chat box. Quickly. Quick, what is the need of Facebook? What was the need of Facebook? Connecting people, Anshul. Thank you. Yes, connecting people for communication, Bhupinder. Okay. It's a platform to connect people, advertise our product. Neha, by the way, they didn't actually think of advertising directly. Eventually, gradually, it became a part of it. Yes. But I appreciate your answer. Connection between old friends, Bhavisha. Yes, thank you. Balesh, marketing, influence people to purchase products. Okay, Priti. Okay, everything is there. You are right, guys. Second is, what's the need of LinkedIn then? If everything is there, you can do what's the need of LinkedIn? The same job is being done by LinkedIn. Professional connection, employment, and professional connection. How many of you are there on LinkedIn? If you're not there on LinkedIn, you're missing a huge part of professional life. So log in today itself on LinkedIn. So you have identified the need here itself that yes, there is a Facebook, but there is a need for professional connection. If there is, everything is there, both are there now. Personal life and professional life is there. Okay. So there is no more opportunity in social media anymore. Believe it or not. Okay. Thank you, Ritik. I'll connect with you. Pinterest. What is the need of Pinterest? These entrepreneurs are identifying the opportunity there itself. Pinterest, sharing ideas, let's say. That's not there. You can do that on Facebook and LinkedIn, but yeah, there is a different platform, Pinterest. If there is everything now, what is the need of Twitter then? And all these companies are billion-dollar companies. Huh? They're like not startups anymore. They're like pick-oriented platform. Images are there on, okay. Twitter, maybe we can say, okay, for Pinterest you mean. Okay, but there are images on Facebook as well. What about Twitter then? Twitter तो कभी login किया नहीं, पता नहीं क्या होता है Twitter, but होता है, कुछ तो होता है. But these are for celebrities and you know the original news from the celebrities. You can say that Twitter, the hashtag was actually originated by Twitter. Now everything is there. Now, what is the need of? What do you think? Like what I'm going to show next? Write in the chat box. What I'm going to show next. You must be thinking, यार वो अपना वाला एप्लीकेशन आया नहीं यार अभी तक. वो कहाँ है अपना वाला एप्लीकेशन यार? ये सब बोरिंग है. Instagram, man, this is my life. I can't live without Instagram. I can't live. This is my life. बस एक भी चीज ऐसी बता दो आप
which is done by Instagram, which is not done by Facebook? You tell me one thing. What was the need of Instagram? Yes, chat box, guys. Like, what is the need of Instagram? This company is a $1 billion company. Youth, okay, it's for youth, but youth can be there on Facebook also. It's like they're not stopping youth. But yeah, I agree that it's actually focused on youth. More? What is the need of Instagram? Easy to use. You have to do a lot of hard work to use Facebook. Huh? More simplified. Huh? Pratik, I feel like easy, free online shopping app. Tejesh, okay. It's a free online shopping app, kind of simple. Yeah, Facebook is so complex. You gotta solve so many maths problem before seeing one picture, right? On Facebook. Now this company is making hell lot of money, though it was not required. New platform promoting products and services. So Bhupinder, you also start a new platform, right? It's a new platform. You start new platform. You also become billionaire, Bhupinder. Right? What was the need? My question. Just to simplification is the need, because Facebook was complex. Shopping app, because you're not able to shop from Facebook, that was the need. Now see, and what we are discussing, it is entrepreneurship, guys. People get bored and want something new, so one app after another. Okay, Sneha, I believe that people get bored of something and people want something new. Now, Facebook is, there are more people on Instagram, right? More youth on Instagram. Why? Because all our relatives and all relatives are there on Facebook. Mama, chacha, tao, sab aa gaye Facebook pe, right? And they are sending you request and चाचा आके बोलते हैं यार नेहा मैंने रिक्वेस्ट डाला है अभी तक तुमने एक्सेप्ट नहीं किया भूपिंदर आई आती है भूपिंदर की बोले लाइक भूपिंदर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था अभी तक ऐड नहीं किया मुझे क्या मैं तेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकती क्या you're partying on Saturday updating your pictures with बीरा and like तुम्हारी एग्जाम है नेक्स्ट डैड का कॉल आता है तुम्हारी एग्जाम है नेक्स्ट वीक क्या कर रहे हो ये और ये कब से चालू किया तूने पीना बताया नहीं हमें and you're like boss man I need something new I don't want that judgments I don't want that yes or no yes you want freedom yes or no you don't want to get judged yes one more thing at that age of 22 23 right at your age early 20s 20 21 you want to be like different you want to be stand out from the society you want that glamour right you want to stand out yes or no what is that feature in Instagram that makes you grand that makes you feel grand celebrity like you are the celebrity what is that one feature can you write on the chat box that makes you feel grand celebrity yes reels are there video reels one feature that's not there on Facebook the reels you can make on Insta by the like Facebook also blue tick yes Manshita true that's there on Facebook also one more feature IGTV is okay videos no that makes you boss तेरे कितने followers हैं yes
That's not there on Facebook. कितने friends हैं Facebook पे? How does it matter, man? I don't care about how many friends are there, how many followers are there on Insta. That's what followers. That makes you feel grand. That followers. Yes. How many followers? 5,000. Hey, you are so poor, man. You only 5,000 followers. I have 15,000 followers. Yes. That makes you feel grand. One more thing. At that age, youth want to look good, right? वो कांच के सामने जाके आप करते रहते हो ना, चलता रहता है. आज शाम सैटरडे इवनिंग है, स्टारबक्स पे बुलाया है उसने, टिंडर पे बात हुई थी, पहली बार मिलने जा रहा हूँ. हाउ डू आई लुक? क्या है उसके लिए फीचर? व्हाट इज दैट फीचर दैट्स नॉट दैट देयर इन Facebook, that good? What is that feature that makes you look good? Yes, in the chat box. What's that feature that makes you look good? Filters. Yes, thank you. So filters are there to make you look good. Can you see the need of the youth, and that has been provided by Instagram, guys? Yes or no? What is this? This is entrepreneurship. Tell me, guys, what we are discussing now, do you think this was discussed by Instagram, Twitter, Facebook, and LinkedIn founders when they were developing an application? Yes or no, guys? Just write yes in the chat box if you feel they discussed the same thing when developing this application. Yes or no? In the chat box. I want to see like how many of you there who can connect to me and who can connect this entrepreneurship session. Yes or no? Yes. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for your participation, guys. This is entrepreneurship. Can we do that? Can we do that? Coming at the application, it's not you just ask and someone will make an application. Can you see the fundamentals which go behind entrepreneurship, identifying the need of people and coming up with the fantastic products and services, selling it? This is entrepreneurship. Yes. Now, everything is there, guys. Now, if I ask you to come up with one more application, you're like, हो गया यार, सभी तो सब कुछ तो हो गया, क्या बचा है कुछ? Instagram के ऊपर कुछ भी नहीं है. Now there is one more application, which is there is a space. Can you see that there is a space, blank space? Which application I'm going to show now, which is trending now, which is that application which I'm going to fill that space with. Snapchat is there, kind of. Yes, yes. One more application which I am. YouTube is there. Yes. Newer than, it's just 1 year, like not even 1 year, like 1 year. Yes. In India, it's there. Takatak. I didn't honestly, TikTok chalta tha. Takatak, I don't like that name, but still. Thank you so much, Arpita. It is Clubhouse. Thank you. Now आप बोलोगे यार everything is there in Insta and सब कुछ है. What was the need? In one word, can you say what was the need of Clubhouse? What was the need of Clubhouse? One word. People want to speak. People are not, there are so many people who are looking for knowledge. They want to listen. They are not too much concerned about their looks and sharing the pictures. Yes, people want to listen and speak that you can't do on Insta. Obviously, you can create videos and all, but you want live chats, podcasts. Yes, that was the need they identify, and this is $4 billion companies, right? $4 billion companies in 1 year. Yes. Can you identify that need in the society and come up with an application and sell it? You can. What is $4 billion? $1 billion is how much in rupees? 7,000 crores. 7,000 crores. एक लाइफ में हम लोग 2 crores बना पाते हैं. Average middle class people, 2 crores. 1 crore का flat और 1 crore अगर saving हो गया तो 2 crore in the entire life. This company
7,000 multiplied 4, that is 28,000 crore in one life. You want to make that money, guys? That kind of. और ऐसे ही चलना है यार, चलता है तो चलना है, ठीक है, जॉब मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ठीक है, कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में. ये कॉलेज यार, कॉलेज प्लेसमेंट अच्छे नहीं है यार. कॉलेज यार, फ्रेंड्स यार, ये फ्रेंड्स है ना, बहुत यार, फ्रेंड्स बार बार कॉल करते हैं, दे आर नॉट लेटिंग मी ग्रो. यार पेरेंट्स, यार पेरेंट्स ने यार अच्छी अपॉर्चुनिटी देते तो और अच्छा मैं कर लेती यार. मे बी सिटी का ही प्रॉब्लम है यार, मे बी इंडिया का. ये सारी चीजें चलती रहेंगी. You need to have that zeal, and you can do that. There is an environment now. There are people supporting you and encouraging you to come up with your ideas and start your own startup, right from government to college now. So I don't think excuse ka you have any space for the excuse. Yes. So guys, you can do that. It's just that you need to identify the need and come up with that idea. Yes. Some good ideas. Can you see that someone identified this need, came up with this idea? Someone identified this. Like सबको गर्मी लगती है इंडिया में, तो everywhere like यहाँ अंबाला में थोड़ा ठंड होगा, but गर्मी में हो सकता है. Portable AC, right? Duracell. You can identify the opportunity here itself, and these are rechargeable batteries. How cool is that? It's going to come in India very soon. It's there on Amazon in US. Yes, these are all the good ideas people identify. Drones, plastic spoons, edible spoons. Yes, this is all great products. One of the students, actually, she is making the toothbrush out of bamboo. These are the all stuff people are earning, guys. If you don't want to participate in entrepreneurship, it's our loss, actually. I mean, if you are not taking, and by the way, I tell you, in jobs also, when you're expecting a good job, jobs are also expecting entrepreneurship now. Aarti ma'am, Prem sir, do you agree with me that jobs are also expecting intrapreneurship? What do you call it? Intrapreneurship. Yes, sir. Definitely, sir. An organization. In teachers, like when I SIBM and when I go to colleges, colleges are promoting entrepreneurship to be think entrepreneurial. So इतना जब करना ही है तो खुद के लिए करो फिर. Yes. So that is the thing. So what is entrepreneurship? Entrepreneurship is 5 elements. Just remember that you need to have that vision, business idea, or opportunity. Genes, remember that. The Instagram, remember that. Clubhouse. Remember the bottle one, the balcony, decorating balconies. Remember the tailors, gathering resources. Once you have an idea, gather resources. Remember the tailors. Remember that nursery. Remember the college. Let's say if you want to make an application, you go to the college, engineering college, बहुत सारे हैं. There are toppers. Give them 10,000 का project, 5,000 project. Simple. एक कंपनी स्टार्ट सर्टिफिकेट भी दिया ना, तो इंडिया में काम करते हैं लोग. And get that application done. Fiverr, Fiverr. How many of you know Fiverr? Go on Fiverr. There are people developing your website and so many stuff, freelancing work. Fiverr. Come up with the innovation, right? Some innovation, some new idea, some innovation. And risk taking. Take risk. What is risk? What is risk? Take that risk. One is that capital risk. You have 20,000 rupees savings and you are putting your 20,000 rupees. That is risk taking. If you have 1 lakh, do not spend the entire 1 lakh. Just spend 10,000 rupees in creating the first prototype and test it. Do not spend the entire 1 lakh. Yes. Risk taking. And one more thing, risk taking is psychological risk. लोग क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा फेयर है, सबसे बड़ा रिस्क है. लोग क्या कहेंगे? मैं फेल हो जाऊंगी. तो बोला था, अच्छा वाला जॉब मिल रहा था एसडी कॉलेज से, तुमको अच्छा कीड़ा है स्टार्टअप का, करो, अब कर लो, हो गया स्टार्टअप. ये इसका डर आपको है. फेल हो गया, क्या कहेंगे लोग, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी. बहुत बड़ी जिंदगी है गाइस.
Give 1 to 2 years to yourself. I'm not saying the entire not to do job and like even I learned from the job, but give 1 to 2 years for yourself that who am I and can I make money out of being entrepreneur. Yes, risk taking. Or the people who are saying that क्या होगा startup से बहुत risk है, they are the ones, they will clap for you when you become successful. Trust me guys. लोग बोलेंगे, सब कुछ बोलते हैं, they will be the first one to clap for you. अरे मैं जानता था, अरे कुछ तो अलग था यार उसमें, यार नेहा में कुछ तो अलग था, वो अलग ही सोचती थी यार, वंशिता में कुछ तो अलग था यार, वो अलग बंदी थी यार अर्पिता में कुछ तो अलग था, मे बी कीर्ति में, दे आर ऑल, भूपेंद्र कुछ तो डिफरेंट सोचता था यार वो। हम लोग बोलते थे उसको क्या कर रहा है, लेकिन मैं जानता था अंदर से कुछ तो करके दिखाएगा, मैं जानता हूँ, ये वाली फीलिंग आती है बाद में लोगों को। सो डोंट वरी अबाउट इट। 2 to 3 years, give yourself risk taking. And last is, if you can generate profit or valuation out of that startup. Did you make money by selling the jeans, selling the bags? Yes. Constructing the road, decorating the balconies, 10%, 20% margins, because you're providing service to the society, you will take some profit out of it. This is entrepreneurship. There is valuation also, like Zomato. Zomato is in profit or loss, but it has valuation because there are so many people, it has acquired the customers. That's why it has valuation. Yes. And last but not least is social consciousness. If you're coming up with the idea of plastic manufacturing, that's not good. So have some social consciousness. It should not harm the society. It should not harm people around you. That startup. It should benefit people around you. Yes, that is. So remember, this is entrepreneurship. And quick about myself. Prem sir already introduced mine, but I want to show some picture of my journey to share with you that how the journey was. I did my engineering from Indore. You know why I did engineering? Even I don't know. I just did it. After that, I moved to US. I did my MBA from the University of Massachusetts, Boston. This was the beautiful campus. Just a good life. I got full scholarship in second year, by the way, working under 3 professors in their research work. Post that, I moved to California, and I was working with the company ESRI, ESRI. We used to make, they develop GIS solution, Geographical Information System, IT company. This was my the office kind of. Good life next to California, next to Vegas, California, good package. San Diego, San Francisco, Los Angeles, half an hour, Rodeo Drive, Beverly Hills. But that one thing still missing, and that one thing missing was the satisfaction to do something of your own. वो लगता है ना कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ. How many of you think, like, guys, write in the chat box, seriously, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है यार लाइफ में, कुछ है, आती है क्या ऐसी आवाज अंदर से, आती है क्या? Yo in the chat box or yes in the chat box. Yo. How many of you there ऐसी आवाज आती है अंदर से? कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है. You there? Yes? Ritik? Kirti? किरण? अमन, कुछ अलग यार. सब ठीक है, सब लोग कर ही रहे हैं यार. CS इंजीनियरिंग सब कर रहे हैं, MBA सभी कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करना है. सपना, यस. चिराग? Clap for yourself, pat your back. That वो आवाज आ रही है अंदर से, because you are lucky guys. कितनों को आवाज आती ही नहीं है. वो जो बैठे हुए हैं ना अभी, कैमरा स्विच ऑफ करके कुछ बैठे हुए हैं, देखते हैं यार कौन देखते हैं, अच्छा इनके, अच्छा ये शिवानी, चिराग, और इनको अंदर से आवाज आती है क्या? अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया, करो आगे करो, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं. ये तो वहीं पे ही रहेंगे.
pat your back, clap for yourself, feel lucky that वो अंदर से आवाज आती है, वो कीड़ा होना चाहिए, वो नहीं है तो फिर तो यार safety security है job में एक बार. So thank you so much guys for answering. वो आवाज आनी चाहिए. It's very precious. वो आवाज जो है ना वो बहुत precious है. वही आपको that makes you do all these stuff. Quit my job one day and finally वो आवाज आ रही थी, कुछ करना है, अलग करना है, कुछ different करना है. Quit my job, came back to India, and this is the first outlet. And can you see, guys? This is, I mean, quitting job from California, coming back to India. My dad was not happy with this. But after 6 months, this is the same outlets, two outlets we opened. One was Papa's Butter, it's a chain of Mexican food outlets. And Chaat Bazaar is the chaat franchisee. We took two outlets we started, and this is a team of 35 within 6 months. What is this, guys? Can you write in one word, what is this? Can you see this transition? What is this? This is nothing in one word. If I say, Ritik, I won't say success because profit tha, but profit margin, what we expected utna nahi tha. But success tha, theek hai. But in one word, I would say it's try. It was trial. I just tried, and things happened. So just want to convey to you guys that if you try, things happen. Just take the action, take action. This is not a motivational session. I'm just saying that you can try and things happen. And I'm showing you the real life. And satisfaction, yes, Alka. Satisfaction, I'll show you one more picture. What is satisfaction? After 6 months, again, one more outlet. You can see for this, we gave the under table also, right? Cubic City Park in Pune. This is the thing. And this is what, seeing the vision, seeing things beyond what other people do not see. And after 6 months, we started one more outlet for the night, Cubic City Park, Pune. And can you see this people waiting for the food to be served? And here I am, and I'm definitely not missing anything, not missing any party of US, not missing the Mercedes, which I could have bought in US, or not missing anything. I'm just feeling satisfied when people are waiting for your product and service to be served. This is satisfaction. This is satisfaction, guys. आपको satisfaction ढूंढना है ना, come up with a product or service which people just fall for. This is entrepreneurship. Came up with the idea, gathered resources, chefs, and property, and coming up with the product and service and selling it and making profits. This is entrepreneurship. Yes. Again, 6 more months, we started one more outlet in Quadrant IT Park in Pune again. And this is the food we used to serve like that. And one more, again, 6 more months, we started one more outlet in Eon IT Park. He's my partner in crime, Vikas Vara. And here's the team. And this is the crowd, usual crowd. Again, 6 more months, we sold a franchisee in Indore to Amit ji here. And this was kind of a cafe, sort of. And this is the team. This is the food. Not a right time, I know. Not a right time to show this food. But this is the food we used to serve. And with that, one more. I have written one novel, What Happens in America. If you at all you envision yourself or you have dreamt of going to US or how's the life in US, you can read this novel, What Happens in America. Is the story of people middle class who go to US and find the difference in culture, education system, people, party, education, how to get scholarship, and all like knitted in a nice, humorous and emotional novel. If you are, by the way, if you are in long distance, right, in case you can go through this novel. With that, I've been associated with SIBM and various colleges and teaching entrepreneurship, and that's my passion. After
attending this session, guys, in 45 minutes. दिल से जो आवाज आ रही है, दिल से आ रही है, write down yes in the chat box if you really want to become an entrepreneur and feel like you can become and you can do it. How many of you are there? I want to see like how many of you are there who really want to become an entrepreneur? How many of you? And feel proud of it, that you are creating jobs for people. How many of you? Yes, Ritik? Neha? How many of you connect to me and feel that, yes, I came from a literally very small town, Nagda, middle class, and these things happen to me, guys, because वो कीड़ा होता है ना, वो अंदर वो आवाज बोल रहा हूँ मैं बार बार. Not sure how many of you can connect to me. वो आवाज आ रही है ना, that's precious. Do not let that voice down by anyone. Do not let that break. You can do that. Yes. Okay, guys, if 20 minutes left, and thank you so much, guys. I feel so, I literally thank you, ma'am, Aarti ma'am, for giving me the opportunity to connect to students. So, so good energy, great energy, guys. I thank you. Yes, Ritik, if you want to share anything, if you have any question, I think. Ritik will be able to unmute himself now. Good morning, everyone. Actually, yeah, good morning. मुझे I want to ask कि like अभी हम कॉलेज में हैं and we want to learn skills. So क्या trying is better कि मैं कुछ start करूँ, उसके gradual मैं कुछ सीखूँ, या before मुझे कुछ पहले सीखना चाहिए, या तो मैं कोई जॉब करूँ या बुक रीड करूँ या किसी भी तरीके से स्किल्स एक्वायर करूँ? क्योंकि मैंने बात करी और से भी, तो वो कहते हैं कि आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, आप उसको सीखो, 1 साल उसमें अच्छे बनो, कहीं जॉब करके कैसे भी, फिर उसके बाद अपना कुछ कोर्स देखो कि आप क्या कर सकते हो। बेसिक स्किल्स पहले एक्वायर करी जाए, सेल्स है, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और ये सारी, या स्टार्ट करते करते सीखा जाए कि छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करी जाए, फिर उनको एक्सप्लोर किया जाए, सीखा जाए, क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? थैंक यू ऋतिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और सबके लिए आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल, you are in first which year, by the way, Hrithik? You are in second year or which in year? third. You are in third year, and this is your last year, right? Bachelor's? Yes. Okay, good, Hrithik. So now I would suggest, or chalo, I think this is a good point, guys. Always I've thought, because I've done my master's, MBA, बैचलर भी किया था. सिंस बैचलर आई यूज्ड टू थिंक यार कुछ करना है, कुछ अलग करना है, बिजनेस करना है. देन आफ्टर डूइंग एमबीए थोड़ा विजन चेंज हो जाता है एंड यू कम इन प्रेशर. तो गाइज, आप लोग जो भी मास्टर्स करने का सोच रहे हैं यहाँ पे, आई वुड सजेस्ट कि आपको, हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्वेश्चन की यार मास्टर्स करें या पहले जॉब करें? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्या? कुछ कंफ्यूजन है क्या ऐसा कि मास्टर्स करना चाहिए डायरेक्ट आफ्टर बैचलर्स? या yes, Aman? So many of you? Yes. I would, पहले मुझे थोड़ा सा डाउटफुली बोलता था मैं, अब मैं आंख बंद करके कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, go for experience for at least for 2 years, 2 to 3 years, and then go for masters. Without experience, doing masters is a waste of money. Trust me. कुछ मतलब नहीं है. जॉब लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है जॉब लग जाएगा, बट यू वोंट बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. ठीक है? So go for experience for 1 to 2 years. Now, in 1 to 2 years, what would you do? You have two choices. Either you you start your own startup directly. तो आपके पास, if you have 50,000 savings, या मास्टर्स में भी आप 8 से 10 लाख रुपए तो खर्चा करोगे, राइट? तो 10 लाख खर्चा करने से पहले 1 लाख रुपए बोलो पेरेंट्स से कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, आई विल ट्राई माई स्टार्टअप. उसमें 20,000 से प्रोटोटाइप बनाओ, फिर अगेन 20-30,000 से देन आपका मार्केटिंग और रिमेनिंग स्टॉफ, गैदर रिसोर्सेज और उनको देना है जो भी है,
और 50,000 से थोड़ा सा स्केल अप करना है तो वो ट्राई करो 2 साल में. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग. जब आप करोगे तो आपको अलग, यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन, ट्रस्ट मी. अच्छा, मेरी आवाज में थोड़ा दिखता है क्या आपको कि मजा आता है यार एंटरप्रेन्योरशिप में, कॉन्फिडेंस आता है यार, मतलब एक आप यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन मैन. सो दैट इज वन वे. सेकंड, ऋतिक, व्हाट यू आर आस्किंग इज टू लर्न द स्किल्स, करेक्ट? तो आप कोई सी स्टार्टअप में, लेट्स से क्लॉथिंग स्टार्टअप, राइट? यू वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लॉथिंग. सो व्हाट यू डू, यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन मिंत्रा. मिंत्रा नहीं है तो छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं जो ऑनलाइन है, उनमें आप काम करके देखो. डोंट वरी अबाउट पैकेज कि यार मेरे फ्रेंड को यार एसडी कॉलेज ने यार 25,000 मिल रहा है, उसको तो 20,000 पर मंथ मिल रहा है, 25,000 स्टार्टिंग पैकेज. यार मैं भी यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, मुझे 6,000 भी नहीं मिल रहे, 7,000 नहीं मिल रहे. Do not worry about money initially. Even 6-7,000 per month is fine. I started with 7,000. ठीक है, but that made me, that made me a strong person. सेल्स का जॉब था वो. तो आप रिलेटेड स्टार्टअप्स को फाइंड करो. अभी आप लोग सब थर्ड ईयर में है, सेकंड थर्ड ईयर में है. यू रिलेटेड स्टार्टअप को अभी से फाइंड आउट करो आप कि यार स्टार्टअप्स क्लॉथिंग में कौन से हैं. इफ इट्स अ कंस्ट्रक्शन में इंटीरियर डिजाइन या कंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन से हैं. इट्स एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स कौन से हैं. If it's education, who are the education startups? Do job there as marketing or something. कुछ भी करके आपको बोलेंगे ना कि यार 10,000 है, सर 8,000 का जॉब दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जॉब करना है आपके यहाँ पे. थोड़ा मुझे कम आता है, मैं कर लूंगा, बट सर्टिफिकेशन लेना है डिजिटल मार्केटिंग और ये सर्टिफिकेट्स ले सकते हो आप. यूडेमी से 500 रुपए में आता है. वर्क फॉर 1 year or 2 years and see that this is startup and you will get to learn a lot. Do not rush for packages and top companies at this stage. If at all you, हाँ सोच ही रखा है कि 9 to 5 जॉब करना है, that's a different thing. मैं नहीं बोल रहा हूँ जॉब्स नहीं करना चाहिए. It depends on person to person. आपको जॉब करना है तो करो, कोई बात नहीं, फिर उस लाइन में जाओ. But at all, if you are thinking to create something new, try something new. यार लाइफ एक ही है, राइट? उसमें भी ट्राई नहीं किया तो क्या मतलब है? एक लाइफ तो मिली है. ट्राई नहीं किया, 50 साल में बोल रहे हैं यार स्टार्टअप करना था यार, हो नहीं पाया अभी, ठीक है. क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का? क्या कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि ट्राई नहीं कर सकते? तो क्या है यार, फिर क्या मजा है लाइफ में? सो टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, 1 year work in one startup and second year you can try your own startup in that particular industry. क्लोथिंग में किया तो नेक्स्ट ईयर आप क्लोथिंग का स्टार्ट करो. पेरेंट्स से 1 लाख रुपए बोलो कि आप 10 लाख तो वैसे भी देने वाले थे मुझे मास्टर्स का, अगर देने वाले थे तो 1 लाख दे दो, मैं ट्राई करता हूँ, राइट? और उस 1 year में you come up with a prototype. Yeah, that's the best way. और स्किल्स तो सीखना ही है ऋतिक. तो स्किल्स आप इधर आप ऑनलाइन सीख लो या तो किसी स्टार्टअप में जॉब करके सीख लो, बट विजन वही होना चाहिए कि मुझे खुद का स्टार्ट करना है. ठीक है, दैट इज समथिंग. प्रेम सर का, आई थिंक प्रेम सर asked that suggest some areas in which our students can start thinking to work. सर आई थिंक अभी जो चल रहा है, सी मैं 2 आंसर्स दूंगा इसके. फर्स्ट आंसर तो आप, it's up to your passion, what you really want to do in life. People are making money out of trash also. कचरे से लोग पैसा बना रहे हैं. एग्रीकल्चर में लोग पैसा बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में पैसा बना रहे हैं, क्लोथिंग में बना रहे हैं, ऑन एजुकेशन में बना रहे हैं, हेल्थ केयर में बना रहे हैं. तो पैसा हर जगह पे है. फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आपको क्या पसंद है. There is Karma Yontan from Bhutan. He came to SIBM. He is an entrepreneur. उसको कचरे से प्यार है. So SIBM में आए, in the college वहाँ डस्टबिन पड़ा था. He went to the dustbin और गीला कचरा उसने हाथ से उठाया अपने, and he smelled and he saw कि यार ये कैसे टाइप का कचरा है और उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं. इंडिया में किस तरह का कचरा होता है. Can you see? This is passion. तो पैसा तो हर फील्ड में है. You just need to identify what you love, who you are. आपको राइटिंग पसंद है, पोएट्री पसंद है, म्यूजिक पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, बोलना पसंद है, सेल्स पसंद है, आईटी कोडिंग पसंद है, क्लोथिंग पसंद है, फैशन पसंद है. You can make money
anywhere. And the process will remain the same as we discussed. वो genes याद रखना हमेशा, process वही है, right? Second, अभी जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, दैट इज हेल्थ केयर, ऑनलाइन हेल्थ केयर बहुत चल रहा है, ठीक है? इसमें भी स्टार्टअप्स फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं है. इट्स अगेन व्हाट यू रियली वांट टू डू. तो ट्रेंड्स तो आते हैं और जाते हैं, आप कौन हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. बट स्टिल हेल्थ केयर ऑनलाइन बहुत चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत चल रहा है अभी. डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जो भी आप हेल्प कर सकते हो बहुत चल रहा है. ऑनलाइन कोचेस बहुत चल रहा है. ऑनलाइन कोचेस, इफ यू आर गुड इन समथिंग, यू कैन स्टार्ट योर ओन कंसल्टिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग, and you can start online coaching, by the way. वो बहुत चल रहा है अभी. That is the future for next 3 to 5 years, right? कुछ ज्यादा पैसा खर्च करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में if you can become a broker or agent और trading कर सकते हैं आप lithium ion batteries का. That is the future. VR technologies में can you come up with the gadgets? One thing guys, if you want to come in manufacturing chips, जो chip manufacturing होती है, अभी चाइना का इंडिया काफी कुछ मूव हो रहा है, right? So Indian government is looking for the chip manufacturers, right? That you can develop chips and not develop, at least manufacture. Design कर सकते हो तो nothing like it. That you can do. Online tailoring अभी आ रहा है. One business I feel like अभी भी बहुत scope है. Online tailoring अभी alteration. Online alteration is a good field in clothing. Online alteration. Online clothing तो हो गया बहुत. It's a red ocean, मतलब बहुत ज़्यादा competition है उसमें. But online alteration is one business idea. Decoration of balcony, environment बहुत चल रहा है. Decoration of balconies is very good idea, right? By the way, sir, I do one free webinar on business ideas in 2021. So next time I'll share that link where for 1.5 hours I do nothing but share all the business ideas. So next time I'll share that webinar link. Your students can join in that webinar. It's a free webinar for 1.5 hours. I usually do on Saturdays. वो बहुत चल रहा है अभी online. So these are the areas you can think of. Shopping platforms here. By the way, you can, not sure if most of you would know, but Fiverr is one, Fiverr.com. I have written in the chat box. Fiverr, if you have any skill, video editing, let me share here itself. Let me share Fiverr.com. So if you go here, if you have any skill, you can start selling your skills. Like for example, if you have writing translation, you can start selling your skills here. And it's a platform where you can get digital marketing, graphic design, music, audio. If you are good in programming, you can start selling at least. So this thing you can do. Fiverr, Upwork is also freelancer.com. These are the companies you can explore to earn money. Excuse me, sir. Yes. I have few more questions कि जैसे आपने बात की कि ऐसे स्टार्टअप्स को फाइंड आउट करो. So पहली चीज तो ऐसे स्टार्टअप्स को कैसे फाइंड करें, कि हम किसी कंपनी में डायरेक्टली ज्वाइन करें या ऑनलाइन कैसे फाइंड आउट करें. और सेकंड की हमें अपने ऊपर क्या चीजें वो रखनी है कि मुझे किस किस उसमें एक्सपर्टाइज होना है, इस स्टार्टअप में मुझे क्या क्या सीखना है, कि फोकस क्या होना चाहिए प्राइमरली पहले हमारे लिए स्टार्टिंग में, कि हमें आइडिया जनरेशन स्किल सीखनी है उस स्टार्टअप में पहले, या मार्केटिंग देखनी है वो कैसे कर रहे हैं, या उनका प्रोसीजर समझना है. और सर जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आपने आइडियाज कहा कि आप एक फील्ड में जिसमें भी आप अच्छे उसमें एक्सप्लोर करो, ठीक है. जैसे मैं कुकिंग में अच्छा हूँ, तो क्या मुझे उसमें जाना चाहिए, या मुझे बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, जैसे आपने जीन्स वाला कहा, उस प्रोसेस को समझना चाहिए पहले कि कैसे बिजनेस को डेवलप करके उसे आगे बढ़ाया जाता है. उसके बाद एक पर्टिकुलर स्किल पे उसे एक्सपेंड करो, फिर वो नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई कर लो. ऐसे करना चाहिए या एक में पहले? ये 3 क्वेश्चन बेसिक आई वांट टू आस्क.
ओके ऋतिक, द फर्स्ट इज आपका जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन ये है कि स्टार्टअप में क्या सीखना चाहिए सबसे पहले. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द हाउ टू डिजाइन अ प्रोडक्ट एंड सर्विस. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपका कंपेटिटर में जाके आप, इफ यू आर डूइंग अ जॉब देयर, सबसे पहले देखो वो लोग प्रोडक्ट और सर्विस क्या डिजाइन कर रहे हैं. ठीक है, कैसे डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग. और उनके नेटवर्क क्या है, उनकी टीम कौन सी है, राइट. तो यू नो कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर पाओगे. करेक्ट. यू आर एन एंटरप्रेन्योर. इमेजिन मुकेश अंबानी, उनके पास भी यार 24 आवर्स हैं, कैसे करते होंगे वो सब कुछ. सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज मोर अबाउट किससे क्या काम कराना है. ये स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन गाइज, हाउ टू डेलीगेट द वर्क, किससे क्या काम कराना है. बीइंग अ लीडर, कि आप बोलते हो और लोग काम करते हैं, वो स्किल सबसे ज़रूरी है आना. कि यार ये टेलर कहाँ से लाना है, ये मार्केटर कहाँ से लाना है, किससे क्या काम कराना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो यू नीड टू फर्स्ट नो कि प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करना है. सेकेंड, कौन क्या काम करेगा, ये स्किल आपको होना चाहिए. तो उसमें क्या काम करना है, ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग कराना है, ऑपरेशंस कराना है. ये आप सब सीखोगे स्टार्टअप में जॉब करके. और खुद को अगर थोड़ा बहुत ऑनलाइन सीख सकते हो तो आप खुद की स्टार्टअप डायरेक्ट चालू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टार्टिंग विथ 20% ऑफ द कैपिटल यू हैव. तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन एंड दैट प्रोसेस. हु आर दी टीम मेंबर्स, कौन क्या काम कर रहा है. वेंडर्स फॉर एग्जांपल, टीम में वेंडर्स भी हो गए, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है. कनेक्शंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट. तो प्रोडक्ट सर्विस है आपके पास और कनेक्शंस है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता. फिर कनेक्शंस में फिर वेंचर कैपिटलिस्ट भी आ गए. फंडिंग की तो आपने बोला होगा, यार ये फंडिंग की बात नहीं कर रहा है बंदा. हाउ टू फाइंड फंडिंग, कितने लोग हैं यहाँ पे आप कुछ इस पे, यार ये फंडिंग कैसे मिलता है क्या ये क्वेश्चन. yes sir, I have a question. फंडिंग कैसे मिलेगा सर? फंडिंग कैसे मिलेगा. तो फंडिंग बाद में मिलता है, फंडिंग पहले नहीं मिलता. देखो, आप यही वाली बात होगी कि पेरेंट्स के पास जाते हैं हम लोग कि पहले तो आप बाइक दिलाओ मुझे, तब मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा. तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा पहले फर्स्ट रैंक सर. लाओ. यस. सर फंडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. जैसे अब मुझे मैंने बेकरी क्लासेस कर रखी हैं, तो मुझे बेकरी का अपना मतलब जैसे बिजनेस खोलना है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है. तो उसकी फंडिंग जैसे पेरेंट्स भी इतने ज्यादा एकदम नहीं दे सकते, तो वो कैसे कर सकते हैं बिजनेस. वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. देखो, फंडिंग का ऐसा है कि पहले एक स्टेज होती है, हर एक स्टेज होती है प्रोटोटाइप स्टेज. तो आप पहले प्रोटोटाइप बनाओ. अब आप बोलते हो कि आपने देखा होगा बेकरी शॉप, बड़ी बड़ी बेकरी शॉप देखी होंगी आपने, एंड यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट बेकरी शॉप. यस. यस सर. तो आपको ऐसा लगता है यार बेकरी शॉप स्टार्ट करने में तो यार टोटल 25 लाख का खर्चा है, अब 25 लाख कहाँ से लाएंगे. करेक्ट. तो पापा जपाटा का एग्जाम्पल ले लो. तो पापा जपाटा भी हम लोगों ने थोड़ा सा बड़े लेवल पे स्टार्ट किया था. तो मैं तो चलो यूएस से आया था तो मेरे पास सेविंग्स था, तो ठीक है. बट अगर मैं इंडिया होता तो क्या करता था फिर मैं, आई वुड हैव स्टार्टेड एक शॉप के बाहर जो छोटी छोटी शॉप्स होती है ना, कियोस्क लगते हैं, देखा है ना आपने, पानी पूरी और उसके, वहां से स्टार्ट करने का. आप कोई स्वीट शॉप है फॉर एग्जाम्पल, स्वीट शॉप है जिससे आपका कंपटीशन नहीं है, तो आप स्वीट शॉप पे क्या करोगे, उसमें थोड़ी सी जगह लोगे, स्पेस लोगे, और वहां से अपना माल सेल करना चालू करोगे. बेकरी का घर पे बनाया, वहां पे आपने पहली बात तो छोटा सा स्पेस लिया, और उनको क्या करोगे, 500 रुपीज दोगे मंथली रेंटल, और 1000 रुपीज दोगे रेंटल, कि आपके पास ये जगह है, इसमें थोड़ा सा एक कॉर्नर आप मेरा बेकरी का आइटम भी सेल कर देना. किराना शॉप है फॉर एग्जाम्पल, और कोई सी भी शॉप है इससे रिलेटेड फूड से, ठीक है. आप थोड़ा सा सेक्शन रखो और आपका माल सेल करना चालू करो, और कस्टमर के फीडबैक लेना स्टार्ट करो. पहला प्रोडक्ट, राइट इट डाउन गाइस, पहला प्रोडक्ट इज बाउंड टू बी अ फेलियर. थोड़ा सा, इट्स अ बिटर ट्रूथ. फर्स्ट प्रोडक्ट
is bound to be a failure. आपको लग रहा है कि मैं पहला लॉन्च करूं और लोग पागल हो जाएंगे. इट इज जस्ट लाइक यूट्यूब वीडियो. यूट्यूब पे वीडियो डाला, अरे यार कम से कम यार 5000 लाइक्स आना चाहिए, होता ही नहीं है, बेकार ही बनेगा वीडियो. फिर वो इंप्रूव होता जाता है. सो सिमिलरली तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को कहीं भी लॉन्च करोगे, छोटा सा इधर कियोस्क ले लो, छोटा सा कियोस्क ले लिया, वहां पे आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए खड़े हुए हो और वहां पे आपने 4 to 5,000 रेंट दे रहे हो शाम को आप, और लोग आपकी पेस्ट्रीज खा रहे हैं. यहां से आप स्टार्ट करोगे. अब इसमें कितना बिजनेस कितना लगेगा, एक छोटा सा टेबल है आपका, या छोटा फ्रिज भी ले लिया, लेट्स से आपने 25,000 या 15-20,000 का फ्रिज लिया, टोटल आपका 50,000 में बिजनेस स्टार्ट होता है. तो आपको 25 लाख की जरूरत है क्या? बट प्रॉब्लम अपने साथ यही है ना कि यार एसडी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अच्छा यार एजुकेटेड हैं, कैसे छोटा सा यार, लोग क्या बोलेंगे कि यार ये क्या कर रही है लड़की यार, ये तो सड़क पे खड़ी हुई है रोड साइड. अब यही है यार एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं. और यहाँ से जब आपके पास पैसे आएंगे एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि बॉस अभी पेस्ट्रीज खाना चालू कर दिया लोगों ने एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी. आपकी सिटी में होगी ना ऐसी शॉप्स जिसपे पागल है लोग, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, देन यू गो एंड इन्वेस्ट 5 to 7 8 10 लाख थोड़ी बड़ी शॉप लेके. और जब लोग आपके प्रोडक्ट के पीछे पागल होंगे तभी इन्वेस्टर भी आपको पैसा देने के लिए रेडी होंगे. ये लॉ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है. तो आपको जब लोग आप पे अट्रैक्ट होते हैं, जोमेटो के पीछे यार क्यों इतना जोमेटो के पीछे लोग भागे हैं अभी, क्योंकि लोग पागल हो रहे हैं जोमेटो के पीछे, तो इन्वेस्टर्स भी पागल हो रहे हैं. फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट. लोग पागल हो रहे हैं. डीमार्ट, अरे डीमार्ट पे इतनी भीड़ है तो इन्वेस्टर्स भी पागल हैं. आप कोई सी भी स्टार्टअप ले लो, जहां पे आपके कस्टमर पागल हैं आपके प्रोडक्ट के पीछे, वहां पे ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप पे. फास्टोज है फॉर एग्जाम्पल, ये सारी कंपनीज. तो आपको वो प्रोडक्ट छोटा से ही बनाना पड़ेगा. और आपको एक मैं बता लास्ट चीज है, अगर आपको गाइज एवरीवन टू एवरीवन आई एम सेइंग, आपको अगर 50 लाख रुपए भी मिल गए ना एज अ फंडिंग, चलो मैं देता हूँ 50 लाख आपको फंडिंग, लेट्स से आई हैव अ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स विद मी, हम लोग 50 लाख रुपए आपको देते हैं, ठीक है. बात पैसों की नहीं है, आपको करना ही नहीं आएगा क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्यों रिस्क लेगा ना कोई भी. तो 50 लाख भी डूब जाएंगे और फिर आपको 50 लाख लूज करके आपको समझ में अच्छा यार बिजनेस तो ऐसे करना था यार. अब कौन देगा 50 लाख? कोई देने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है. Yes or no, guys? Can you connect to me, guys, that funding is not important initially. Most important is creating a product or service, creating a prototype, and reaching out to people and getting their feedback. Yes or no, guys? I'll feel happy agar aapko, you can connect to me, guys, on funding. Yes or no? Yes? Thank you. Thank you, everyone. I can see that energy. Thank you. In last last 5 years, I have experienced that creating a product and service is most important. सर Yes. आपने अभी बात करी कनेक्शंस की, सो अभी मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं सीखना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ. सो हम आपके साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं फॉर फ्यूचर? आप में वेबिनार लेते हो, कुछ भी करते हो, सो हाउ कैन वी कनेक्ट टू यू? मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी वैसे तो सेंड कर दिया है, तो आप बता सकते हो तो कि ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर कि हाउ वी कैन कॉन्टैक्ट विद यू फॉर फ्यूचर. You just connect on LinkedIn, Insta, Facebook. If you have any questions, doubts, you can ping me anytime. So I'm there. I'll be happy to help you. And by the way, I do webinars and I have the programs also. If you want to go arjunpanchal.trainercentral.com.
arjunpanchal.trainercentral.com. You will find my programs there. I don't want to sell anything here because मैं उस purpose से आया भी नहीं हूँ. But like 3,500 का कोर्स होता है जिसमें आइडिया क्लैरिटी आती है आपको, आइडिया क्या आपको करना है और मार्केट रिसर्च कैसे करना है, करेक्ट? And again, I'm saying that it will help you. That's why I'm sharing with you. और ये क्वेश्चन आया है. Otherwise, यहाँ पे मेरा पर्पस नहीं है कुछ भी सेल करने का. But I can show you that this is the courses which I'm sharing. Sir, we've lost your audio. Arjun, sir, you're not audible. So can we turn on and off the mic again? We can see your screen, we can see your video, but you're not audible. Online tailor service for women, right? Raymond and all those. See, Raymond custom tailoring. Now Raymond is a big company, but this I'm sure ये उनका नया section होगा जहाँ पे they would be ready to have some resources. They would be looking for some resources. Tailor Junction, tailor near me. अब ये सब tailors हैं, right? Nobody is there for alteration. देखते हैं alteration आता है कि नहीं. जिसपे मुझे अच्छा लगता है वो कि alteration आता है कि नहीं. Online alteration है क्या? Let's say online alteration service हो सकता है होगी. Let's say book online tailoring. ये रहा देखो. Online tailoring, cloth alteration, ठीक है. Tailor नहीं है ये तो सब alteration at home. Yes, आ गया है कुछ. But अभी भी एक brand नहीं बना है, right? Myntra is a brand. अभी भी tailoring का ऐसा brand नहीं बना है. Can you make a brand out of that tailoring? Think about it. Stitch it ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है. तो आप जाओगे तो यहाँ पे जाओ. आप let's say gharfix.com, ठीक है. आप Gharfix पे जाओगे तो वहाँ पे आपको entrepreneur और home पे उनका about us में नंबर मिलेगा, ठीक है. अब यहाँ पे मैं गया, देखो जॉब्स भी लिए हुए यहाँ पे, जॉब्स में गया और जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी होगा इनका इंडस्ट्री, तो आप जा सकते हो. इनफैक्ट यहाँ पे कॉल करो आप डायरेक्ट and call them and just talk to them that if you're looking for, I have these skills, marketing, digital marketing, and this thing, sales, and Google Analytics or etc. And whatever, like आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग पे जाओ. ऑनलाइन कुकिंग तो बहुत सारी है. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फूड डिलीवरीज, तो वहाँ पे जाओ. and if you have any if you want to do guys a job in startups, let me know. SI game में I have so many connects in startups. मैं आपको आपकी इंटरेस्ट में अगर मुझे कनेक्ट होता है तो मैं आपको कनेक्ट कराता हूँ and you can start working with them. If you just tell me your interest और किस फील्ड में आपको काम करना है, I'll connect you to entrepreneurs and you can start working with them and take experience. और बाद में उन्हीं बन जाना. ओके, सो मतलब पहले जाके गूगल पे सर्च करें या कनेक्ट करें, देन वी विल वर्क ऑनलाइन एज वेल. कि फिजिकली तो ऐसे स्टार्टअप्स में होगा नहीं, तो ऑनलाइन ही हम उनके साथ कनेक्ट करके वर्क करना स्टार्ट करें और लर्न द स्किल्स विद द वे. एक साल के लिए एटलीस्ट 1 year. और उन्हें समझाए कि हमारे पास क्या स्किल्स है. हाँ जी, मतलब उन्हें बताएं कि हमारे पास ये स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें कन्विंस करें कि हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से. Do not, one more thing important, do not tell them that I'm looking for a job. Tell them how you can help them. That's it. So on LinkedIn, if you're writing a message, do not say, sir, I'm looking for an opportunity, or yeah, I'm looking for a job. No. ऐसा लगना चाहिए कि आप help करो. So, sir, I can help you and I'm so much interested in that work and I think I can work with you. If you need my help, let me know. I'll be happy to join your company. ऐसा करना. और last में लिखना है तो yeah, I'm also looking for an opportunity and if things match, great. It's a win-win kind of thing. I would be happy to.
It's like a service provider. I have service and I can help you to grow your business with that. Grow your business, right? If you have some, if you're looking for someone like this profile, let me know. Yes, I'll be glad and happy to help to work with you as well. Okay, and by this method we can work 2 or 3 startups as well at the same time, because if we are working online. See, if you're doing full time, then I don't think you will get time to work on another startup. But if you are working as a freelancer, then and startups actually, by the way, they look for freelancers because they do not have money to pay every month. Let's say 10,000, 15,000. They do not have money to pay every. So they'll give you कि यार इतने ब्लॉग्स लिखने हैं और इतना पैसा है, let's say. They will give you freelancing work. तो अच्छा है, freelancing है तो कोई problem ही नहीं है. You can work with 2, 3, 4, 5 startups. Okay. Think about it, guys, that what skill you can sell to startups. Think about it. आप में ऐसा क्या है जो स्टार्टअप पैसा देगा, और ये चीज आ गई आपके अंदर में, तो फिर तो पैसा ही पैसा है, क्योंकि उससे आप वो स्किल से आप आगे आने वाले टाइम में अपना स्टार्टअप क्रिएट करोगे, राइट? वो नहीं तो एसडी कॉलेज तो दे ही देगा आपको जॉब, वो तो देगा, उसके लिए वेट करना है तो ठीक है, आएगा टाइम तो कर लेंगे, नहीं तो देखेंगे. थैंक यू सर, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फिर डीएम कर दूंगा. थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा. थैंक यू. If some of our other students are also having some questions, please go ahead. You may put them in the chat box, or you may raise your hand. So we have Arjun sir available with us today, and he has been actually answering all the questions. Kavi ma'am, can I? Yeah, please ma'am, go ahead. First of all, sir, it was a wonderful session. I've never had such an interactive one in a long time. And thank you. With you is, I was just viewing your profile. You've had a chain of restaurants with you, right? But before starting that, what was the biggest hurdle that you faced into your entire duration? I mean, when you just finished off your studies, you went for something big. So what was the biggest hurdle that you faced, and how did you overcome it? There are so many hurdles. Identity, finding the chef was the hurdle actually, but we found the entire team. By the way, we found the chef. Getting the knowledge, by the way, of equipment, finding the equipment partners or vendors. That was the challenge. Coming up, the biggest challenge, I'll tell you. That's why I ask all the students now what mistakes we have done, and students should not do those mistakes. Coming with the right product which people want. And that took us time to understand that. For example, I'll give you an example. I was so crazy for burritos. Burritos, it's like a roll in Mexican food, burritos. So when I was in US, I used to love burritos. And when I came back, मुझे ऐसा लगा था कि लोग पागल हो जाएंगे burrito के पीछे, क्योंकि मैं पागल हूँ. But eventually it did not happen. People didn't like it. People liked rice bowl. एक rice bowl होता है, वो लोगों ने ज्यादा पसंद किया, burrito पसंद ही नहीं किया. अब उसमें बहुत सारे पैसे गए, टाइम गया लोगों को समझने में कि लोगों को क्या चाहिए. And then we started also चाट बाजार. मैंने जो बताया था चाट बाजार, और छोले भटूरे पाव भाजी खा रहे हैं लोग, तो जिसको मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ज्यादा, कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मैक्सिकन के पीछे क्रेजी होंगे, बट पीपल वेंट क्रेजी फॉर चाट बाजार. छोला भटूरा पाव भाजी 60-70 रुपीज में मजा आता था उनको खाने में. सो वो ट्रूथ है. तो वो चैलेंज सभी एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और लोगों को क्या चाहिए और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. वो अगर मैच हो गया एक बार, तो वर्ल्ड इज योर्स. वो एक चैलेंज था. ट्रेनिंग में बहुत चैलेंज था. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि नाउ यू कमिंग फ्रॉम नथिंग टू बोस्ट ऐसा, बट यू कमिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया, वहां पे मतलब थोड़ा सा किसी ने खांस लिया तो 4 बार सॉरी बोलते हैं, 4 बार थैंक यू बोलते हैं. गेट
ओपन किया तो लोग खड़े रहते हैं वहां पे लेके, इतना ज्यादा ओवर पोलाइट। और यहाँ पे आके मैं शुरू में मैं बहुत पोलाइट रहता था, तो हम लोगों के ज्यादातर वर्कर्स थे, नथिंग ऐसा मतलब कि अगर मैं स्टेट को किसी को कुछ बोल रहा हूँ, बट वेस्ट बंगाल या उड़ीसा जिनका लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो मैं उनसे पोलाइट में बात करता हूँ, उनको समझ में नहीं आता था। यार प्लीज, मेरा पार्टनर हंसता था, बोले प्लीज क्यों बोल रहा है, मैं थैंक यू बोलता हूँ, बोले थैंक यू बोल रहा है, उनको समझ में नहीं आता। तो उनको ट्रेन करने में बहुत मुझे टाइम लगा कि उनको ट्रेनिंग कैसे की, क्योंकि आज आप सिखाते हो कल भूल जाते हैं। कम क्वांटिटी डालना है प्रिंट में, उनको मैं 4 बार बोलूंगा तो भी उनको नेक्स्ट डे सेम चीज बोल। सो रेपिटेशन जो था वो भी एक चैलेंज था। ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज वाज वन ऑफ द हर्डल्स। लास्ट वन मोर थिंग जो सबसे बड़ा चैलेंज था, ब्रिंगिंग द स्टार्टअप इन प्रॉफिट्स। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं सबसे बोल रहा हूँ गाइस, दिस यू मे फाइंड दिस इन योर स्टार्टअप, हम लोग एक्सपेंसेस पे ध्यान देते हैं। योर बॉस रेस्टोरेंट तो एसी होना चाहिए, तो कुशन होना चाहिए, तो म्यूजिक होना चाहिए, तो पेस्ट्री दे रहे हैं तो पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तो क्लॉथिंग में है तो क्लॉथ का मटेरियल बेस्ट बेस्ट देंगे इन लेस प्राइसिंग। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक बहुत अच्छा देना है, अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ये ऐसा करना है? Everybody thinks it ऐसा that way, right? सब लोग सोचते हैं ऐसा, बट होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, यू फोकस ऑन एक्सपेंसेस, अच्छा देने के चक्कर में आपका प्रॉफिट चले जाता है। तभी बोलते हैं यार, 10 रुपए में समोसा दे रहा है, जैसे ही देगा तो वैसे ही देगा, क्योंकि अच्छा दे नहीं सकता, क्योंकि घर कैसे चलेगा। तो हम लोग ने बहुत, फॉर एग्जाम्पल ब्लेंडर, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ओपनली, ठीक है, ब्लेंडर्स होते हैं, और बहुत ऑथेंटिक मैक्सिकन फूड देना है, ऑथेंटिक मैक्सिकन। उसके लिए मिर्ची लाना है, वी वेंट टू बॉम्बे। तो इंडिया में झुलकिया मिर्ची बोलते हैं जिसको, एंड एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट मेक्सिको से आती है मिर्ची, ऑथेंटिक टेस्ट देना है। यू नो इन हाउ मच वी बॉट इन मिर्ची इन? गाइस कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स की मिर्ची कितने में आती है 1 kg? हमने कितने में ली? 1000, 2000, 5000, 10,000? We bought in 16,000 rupees. You paid this much for a US kilo? dollars? Huh? Sorry. You paid this much? Exactly. And I call it a blender, obviously. It's blender of epitome of blender house. पर वो एक्चुअली हम लोगों ने बाद में यूज भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वही 500 रुपए किलो की मिर्ची चलती है इंडिया में, वही पसंद है, लोगों को पसंद भी आई नहीं। तो लर्निंग ये है कि जो कस्टमर को पसंद है वो दो, जो आपको पसंद है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट्स व्हाई समबडी आस्क्ड कि बेकरी का शॉप है, ये है, शॉप मत डालो, पहले तो ये देखो कि आपकी बेकरी पसंद, आपका जो पेस्ट्रीज हैं लोग पसंद कर रहे हैं, और उसको चेंज करो अकॉर्डिंग। तो ये चैलेंज होता है कि प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट व्हिच कस्टमर्स लाइक। तो ये सारे चैलेंजेस थे जपाटा में। तो फिर एक और जो हम लोगों का इनिशियली जो चैलेंज था कि रेंटल्स हम लोगों ने किया, बॉस मॉल में खोलना है, मॉल में खोल दिया तो रेंटल जिसके 70-80,000 पर मंथ था, उतना जनरेट करना है। रेवेन्यू भी आता था, लेकिन जो प्रॉफिट बचता था वो कम था, क्योंकि रेंटल्स बहुत ज्यादा थे। 80,000 इज टू मच रेंटल। तो हम लोगों को फिर लगता था कि देन वी वेंट इनटू आईटी कंपनीज। आई शोड यू दैट अब आईटी कंपनीज में रेंटल्स लाइक 20,000, 25,000 वॉल्यूम आप होता वहां पे, तो मजा आया बिजनेस करने में बाद में। तो कॉस्टिंग इज द चैलेंज, प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट इज अ चैलेंज। Thank you so much. That was an interesting one. Thank you so much, sir. We even have one other question from one of the participants in the chat box, Aman Kumar, that during the time, the COVID times, how have you managed the restaurant business since everyone was at home in that time? Like any online branding? To be honest, shut down. To be honest, shut down. There is no other option. People gave us so many suggestions. अरे अर्जुन ऑनलाइन करना, जोमेटो पे जाना है, ये करना, because all our outlets were in IT companies later on. तो उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं था वो हम लोग, because you are not able to sell outside IT companies. You're not allowed to. So कोई ऑप्शन दूसरा था नहीं. And opening on Zomato, coming on Zomato, आपको लगता
है, but Zomato takes, when we started, they used to take 10% of the profits, 10%. Now they take 30%, no, 28% they take. तो वो मजा है ना, चले गया, मतलब आपको सिर्फ करने के लिए करना है तो ठीक है. I mean, at your age, if you want to do it like early 20s, चल जाएगा, आपको experience मिलेगा. But if I consider my age, considering the education and all those, आप सब करने के लिए कर रहे हो, profit नहीं है, तो मजा नहीं है एक्चुअल बिजनेस करने में, प्रॉफिट नहीं है. तो हाँ, मतलब इसलिए तो हम लोगों ने अभी तो शटडाउन है, अब ओपन हो रहे हैं और होने वाले हैं, बट अगेन उसमें कैश डालना है अभी और वापस से उसको अप एंड रनिंग करना है. क्या हो रहा है अभी, 25% अलाउ है आईटी कंपनीज बनाना. 25% बहुत कम लोग होते हैं और हम लोग का जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है, उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा पूरा. तो एक्सपेंसेस अभी भी ज्यादा है और रेवेन्यूज कम है, तो अभी वी आर वेटिंग दैट पॉइंट विल कम. So meanwhile, entrepreneur to entrepreneur होते हैं, right? I created a product that I showed you, right? Live example, guys. I'm showing you adapting to the need. Or abhi adapting the need is what I can do is like education. I have been there for the last 5 years. मैंने अपने product बना दिए, मैंने show किया आपको 500 में that I'm helping entrepreneurs. ठीक, क्या कोई problem नहीं, restaurant चले गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बंद है वो, कोई problem नहीं. You create your products. So education में भी वो भी product है, right? So you create your product, adapt to the needs of people. We have in your mind in our website. Aman, we had a website, papazapata.com, but later on वो बंद ही हो गया था क्योंकि हम लोग IT कंपनीज में थे, उसका एक्चुअली मीनिंग ही नहीं था वेबसाइट का. मार्केटिंग की बात आती है, ब्रांडिंग, देयर यूज्ड टू बी 25,000 पीपल इन वन IT कंपनी, मतलब IT पार्क में. अभी इतने लोग थे, आपको क्या ही ब्रांडिंग करना है, लाइक आपने भीड़ देखा वहां पे, राइट? आई शोड यू दैट रश, जरूरत ही नहीं था. इट वाज जस्ट क्रैकिंग द डील, गोइंग इनटू आईटी पार्क्स, वो हमने कर दिया. उसके बाद तो कैश ही था, शुरू में करते थे हम लोग. आप देखोगे पापा सफारा के पेज पे जाके देखोगे तो यू विल फाइंड दोस ब्रांडिंग एंड डूइंग दोस स्टफ. वी डिड दैट. Thank you so much, sir. I think Aman's question has been answered very well, and certainly during COVID times, many of us had this question, but you have actually answered all of that very well, and I can't see any more questions in the chat box. In case there are some more questions, students are free to post them in the chat box, but still considering and valuing the time that you have actually spared for us, we would like to move towards the next segment for this session. And actually, you know, Mark Twain has said that the secret of getting ahead is getting started. And today you have actually demonstrated that to our students by sharing your experience of your journey of your entrepreneurial venture. And specifically when you asked about that, you know, students ko sochna hai whether they want to go for masters or whether they want to go for an entrepreneurial venture. Even being a faculty member, I think everyone will agree with me. बहुत बार students हमसे class में भी ये question करते हैं that what should we do, ma'am, or what should we do, sir? And they are really actually confused that how do they go about it. So I think to a greater extent today you have even answered that question. छवि मैम, आई थिंक हम भी इस क्वेश्चन का आंसर देने का भी तरीका पता चल गया है दैट हाउ वी कैन एनकरेज आवर स्टूडेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सर रियली मेनी टाइम स्टूडेंट कम्स, ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है, मैम आगे क्या करूं, मैं एमएससी का ऑप्शन भी है हमारे पास, मैं आगे फैमिली बिजनेस में भी जा सकता हूं. सो मेनी ऑप्शंस उनके पास होते हैं हमारे पास, लेकिन हमें जवाब देने के लिए उन्हें बहुत क्लियरली नहीं होता है कि हम बच्चों को क्या बोले. लेकिन अभी आज के सेशन के बाद वी आर इन दैट पोजीशन दैट वी कैन गाइड आवर स्टूडेंट्स वेरी वेल. थैंक यू सो मच सर. Definitely, ma'am. Thank you so much, sir. Actually, carrying forward the session and really marking the presence of everyone who is here with us, may I please now take this opportunity and invite Dr. Aarti, the convener of Entrepreneurship Development Cell and the head of Department of Electronics and Information Technology, to propose a vote of thanks to Arjun Panchal, sir, for being here with us. Over to you, Aarti, ma'am. Thank you so much, Chavi ma'am. It's my privilege to pay formal vote of thanks. लेकिन इसको मैं ज्यादा फॉर्मली नहीं लूंगी सर. मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू. आप
मैं आपसे सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब हमने अभी नेक्स्ट सेशन में ईडीसी इसी सेशन से, जैसे लास्ट ईयर से हमारे मोहित सर हमारे साथ हैं, उनकी गाइडेंस में अभी हम काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर सर के पास था, इस बार ऑफिशियल ड्यूटीज होती हैं, चेंज होती रहती हैं, वो मेरे पास आ गया। तो जब हम प्लान कर रहे थे, मैं, छवि और मोहित सर, तो हम सोच रहे थे हम किसको बुलाएं। सेशन का फर्स्ट हमारा अब इस होगा, ये भी जो भी हम एक्टिविटी करेंगे। तो छवि ने आइडिया दिया, हम सब एम्बेसडर ट्रेनिंग के प्रोग्राम में थे सर, वहां पर हमने आपका सारा लेक्चर सुना और छवि ने एकदम से क्लिक किया कि मैम हमने वो बिजनेस प्लान वाला सेशन सुना था, आपको याद है? मैंने बोला हाँ याद है, मुझे एग्जांपल्स भी याद है। तो देन वी क्लिक्ड कि हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब हमने आपको मेल डाला, पहली बारी में तो जवाब नहीं आया फर्स्ट डे, सेकंड डे जब आपका मेल का जवाब आया, वी वर सो हैप्पी। छवि ने देख लिया था रात को ही, तो उसने मुझे कॉल किया, मैम सर का जवाब आ गया, मैम सर का जवाब आ गया। मतलब हमें इतनी खुशी हुई सर, पता नहीं क्यों, लेकिन क्योंकि हम आपका सेशन पहले सुन चुके थे और आपकी क्वालिटीज जो आप एग्जाम्पल से आपने कन्विंस किया तब हमें, क्योंकि अभी आईआईसी सेल हमने पिछले साल से फॉर्म किया है और हम कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। अभी 2021 के 3rd and 4th क्वार्टर में हमने अपनी एप्लीकेशंस जो एक्टिविटीज की है वो रिपोर्ट हमने सबमिट की है, तो अभी स्टार्ट किया है। तो वहीं से हमें आपके बारे में पता चला, देन वी अप्रोच्ड यू सर। आप ऑथर भी हैं, मेंटर भी हैं, मोटिवेटर स्पीकर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद जब मैंने आपसे बात की, यू सो हम्बल। उससे पहले मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रही थी, पता नहीं सर का किस तरह से रिएक्शन होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, दिस सेशन वाज प्राइसलेस फॉर अस, ऑल ऑफ अस, क्योंकि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छा हम लोगों को मिला है, हमारे बच्चों ने सीखा है। और जिस तरह से मैं बच्चों का इंटरेक्शन देख रही थी सर, आज का जो इंटरेक्शन था, बच्चों ने बहुत अच्छे से इंटरेक्शन किया किसी भी रिसोर्स पर्सन के साथ, और आपने बड़े खुले दिल से आपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी दी कि इफ यू वांट फंडिंग आई विल हेल्प यू, आई विल टेल यू। कोई भी रिसोर्स पर्सन आता है तो इस तरह की हमारे बच्चों के साथ इस तरह खुले दिल से कहता नहीं है कि आप आइए और मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। सर इट वाज अ वेरी प्राइसलेस सेशन फॉर ऑल ऑफ अस, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एज अ टीचर भी। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम with all of us and answering all the questions. Next, I want to thank our worthy principal, sir, Dr. Rajinder Singh, under whose guidance we all are working. We are trying to work very well. And Alka ma'am हमारे साथ हैं, she is convener of CGC. Thank you so much, ma'am. आज आपने हमारा session join किया. Sir, actually CGC, IAC and EDC, these three committees are working together for the growth of the students in our college. Ma'am is convener of CGC, उनकी guidance में हमने बहुत कुछ सीखा कि काम किस तरह से करना है, how we can help students in every field. Thank you so much, ma'am, for joining with us. I'm also thankful to all the committee members of IIC and EDC, especially Prem sir, he's convener of IIC, जो हमारे साथ हाथ से हाथ जोड़कर हर एक्टिविटी में हमारी हेल्प करते हैं और खड़े हो जाते हैं कि नहीं आरती, आई विल हेल्प यू, तुम बताओ करना क्या है। थैंक यू सो मच सर, and all the committee members for their help and support as and when required. Last but not least, I will thank you to all the participants for their active participation today. और इसी तरह की पार्टिसिपेशन आगे भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। आज के सेशन के बाद आई एम वेरी मच श्योर कि 5-7 बच्चे तो मुझे अप्रोच करने वाले हैं कि मैम अर्जुन सर ने हमें ये बताया था, आप बताओ हमें क्या करना है। सो थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन में के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं किस तरह से आपको थैंक यू करूं। इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन फॉर ऑल ऑफ अस सर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू छवि। Thank you so much, Aarti ma'am, for proposing a beautiful vote of thanks and actually, some words directly that you actually shared from your heart. And once again, on behalf of Sanatan Dharma College, we would really like to thank everyone, specifically Arjun Panchal sir, for being here with us today, and to all the honorable faculty members who spared their valuable time. We have also shared a feedback form link in the chat box, so we may please request everyone to share your valuable feedback for this session. And we really hope that this is not an end, but rather a beginning for more journey and for more experiences and more sessions in coming days. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you.